गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. परत एकदा लाईव्ह येण्याचं कारण म्हणजे सोमवारी होणाऱ्या एशियन ह्या विषयाच्या प्रॅक्टिकल संदर्भामध्ये एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल असते आणि सोबतच तुम्हाला प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं असते आणि दॅट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल इफ ही or she needs some questions, then may ask the question. So what type of questions external can ask? So let us discuss about that and how to perform that practical, because practical performance is very important. So without practical performance, your practical never goes beyond the particular boundary line. Okay, boundary line means that of above 10 marks. So that is very important. Okay, so let us discuss one by one all the things related with this practical exam, specifically advanced computer network. Okay, so we can go here, as we already saying this list of practicals, how that list of practicals can be utilized and that can be used for the examination. On the ACN, MSBT exam, then go to the ACN practical exam title. Okay. And then see the list of ACN practicals. The first, not actually first practical, but it is title for the practical. I have taken sequentially all the practicals. Okay, so you can get any one practical for your practical exam. The first one is for a given IP address, network mask and subnet mask, determine other information and implement it. What is other information? All these are the other information. Use any IP address. So you can use any IP address and find the following things. That means find the mask, find a number of subnet masks, subnetworks, number of IP addresses on each subnet. You have to find the first subnetwork. Then only you can find the number of IP address, means the third point. And once you obtain the third point, means you can use this, you can obtain the fourth point, that is number of host per subnet. Okay, as you find the fourth point, you can easily find out the fifth point, that is find first address, and sixth point is last address. So find network ID of each network and find all host IP addresses from each network. So how we'll obtain this one? Go to the ACN and then you can see the ACN practicals. Let us see the first practical. That means this practical. Directly by taking one example, uh, we have taken this example 167.198.174 0.83 and 25 is the cedar. So first is find the mask. So how we'll find the mask? By uh, taking the last digit, that means that slash 25. Slash 25 means number of ones should be 1. Number of ones should be 25. Generally what happens, 24, you get 24 ones. Okay, so now here you can add or we can borrow one more one bit.
from the last one. So last one is all 8 zeros. So one as you borrow one, then you can find the mask. Okay. So 25 total number of ones should be 25. That's it. Okay. So that is a mask. The second one is number of subnetworks. So number of subnetworks, simple formula is there, that is 2 raised to power x, where x is the number of mask bits or one borrowed from host. Host से हमने कुछ borrow किया होगा number of ones, so that is x. So 2 कितना borrow किया है, 1 borrow किया है, तो मैंने रेड कलर में दिया है उसको. 1 borrow किया है, तो इसलिए 2 रेस्ट टू x की वैल्यू 1 हो गई. सो 2 रेस्ट टू पावर 1 इक्वल टू 2. So 2 subnets are there. Number of subnets are 2. Third point was there, number of IP addresses on each subnetwork. How many number of addresses? दोनों के ऊपर. So 128. 2 raised to power y. What is y? Remaining zeros. Out of 32. कितने है 7, 0 बचे हैं. So 2 raised to power 7 is 128 IP addresses in each subnet. दो सबनेट है, दोनों में 128 plus 128. Okay. Fourth point is number of host per subnet. 2 raised to power y minus 2. So 2 raised to power y तो पता है हमें 7 है, और 2 raised to power y निकालने के बाद -2 कर दीजिए उसमें से. So that is नंबर ऑफ होस्ट. तो हमने -2 क्यों किया? सो देयर में बी अ क्वेश्चन अराइजेस. तो क्वेश्चन क्या आपको मिलेगा? हो सकता है एक्सटर्नल पूछेंगे, हो सकता है मैं पूछूंगा कि व्हाई -2. सो हियर we need to subtract 2 for subnet address and the broadcast address. So there is answer. Why we need to subtract 2? While we obtain the number of hosts per subnet. That is a simple question. तो उसमें क्या आएगा कि हम क्यों करते हैं? Because first address and last address, we can say that is a subnet address and broadcast address. तो ये किसी को दिया नहीं जाता, तो इसलिए हमें इसको माइनस करना है. तो यूजेबल एड्रेसेस कितने होंगे वहां पे? तो 126 रहेंगे यूजेबल आउट ऑफ 128 इन ईच नेटवर्क. Okay. Fifth is find the first address from each subnet. First address निकालना है हमें. First address, subnet address और broadcast address. Last address is the broadcast address. तो पहला हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? To obtain the first address in the block, we have AND operation in the with the network mask. तो ये जो हमारा IP एड्रेस है, इसके लिए हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे मास्क भी है यहाँ पे 255, 258, 258, 128, और उसका हमने क्या करना है? एंड ऑपरेशन करना है. तो ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस, दैट इज 167, 198, 174, 0/25. ओके. तो ये फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने का मेथड होगा. Find the last address. तो लास्ट एड्रेस के लिए हमें क्या करना है? Simply to obtain the last address in the block, we have to keep the leftmost 25 bits in the given address as it is and set the remaining 7 bits to 1. तो पहले as it is रखना है, तो ऑलरेडी 1 है, और उसके बाद सारे 7 बिट भी 1 हो जाएंगे, तो obviously we get 255. So 167.198.174.255, क्योंकि सारे 1 है, तो 250 सारे की वैल्यू क्या आ गई वहां पे? 255 आ गई /25. सेवंथ पॉइंट क्या था उसमें? फाइंड नेटवर्क एड्रेस ऑफ ईच सब नेटवर्क. हर एक का सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली पहला जो आएगा बाय एडिंग 128 टू ईच नेटवर्क, पहला आएगा 0 और दूसरा आएगा 128. तो इनिशियली जब आएगा, स्टार्ट में आएगा तो 0 रहेगा, उसमें 128 ऐड कर दो, सेकंड मिलेगा. तो पहला ये 167.198.174.0 और सेकंड आएगा प्लस 128 ऐड कर दिया उसमें, तो ये सेकंड का सबनेट एड्रेस, सब नेटवर्क का एड्रेस मिल जाएगा आपको. लास्ट पॉइंट है यहाँ पे,
फाइंड ऑल द होस्ट आईपी एड्रेस फ्रॉम ईच सब नेटवर्क। हर एक में ऑल होस्ट आईपी एड्रेसेस निकालने, इतने सारे तो निकालना, 128 थोड़ी निकालेंगे ना हम। शुरू में हम हमारा हमें पता है नेटवर्क वन में फर्स्ट एड्रेस क्या है, ये 7 में है लिखा हुआ कि हमने ये निकाला था, यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 डॉट 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 126 127 ऐसे 128 वहाँ पे आपको network address मिलेंगे। एंड द सेम थिंग फॉर द नेटवर्क 2। सो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नेटवर्क 2 इज 167 192 174 128, जो हमने 7th में निकाला था, यहाँ पे ये निकाला है, तो वही यहाँ पे 128 विल बी द फर्स्ट एड्रेस इन द नेटवर्क 2। उसमें ऐड कर दीजिए 1111 255, इसके आगे तो नहीं जाएंगे, 128 टोटल 128 रहेगा, 128 से लेकर 255 तक। ओके, so this will be the network ID. Now we can say that the first one is the network address and last one is the host address. And in between these two, network ID and host ID, number of host IP addresses. Okay, so this will be the first practical. Okay, so limited questions are there. What is a network address? What is host address? What is beginning address, means first address? What is the last address? How we calculate the last address? What is the use of seeder? Okay, like this, a simple questions are there for the first practical. Okay, so but remember that only on first practical, external will ask only on first practical. It is not the case. External may ask on any topic. Okay, so you have to prepare all 14 practicals thoroughly. Okay, for practical as well as for oral. Second practical, a simple practical, it is a repetition of again the 4th semester practical, that is capture ICMP version 4 packets generated. That means wherever, if you get this practical, then go to the uh, download the software. So here you have to download the Wireshark and then capture ICMP version packets. तो यहाँ पर हमें और कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द Wireshark and how to capture the ICMP packets. Okay, what purpose this Wireshark software is used? What do you mean by sniffing? Whether the sniffing is legal or illegal? What are the benefits of using this Wireshark software? Okay, like this. So these are some questions over the practical number 2. Practical number 3, not practical number 3, title is there, that is configure IP version 6. हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि जब आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, then and then only start writing. Okay, so don't write before implementing the question, the practical, or before executing the practical. पहले प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसे दिखाना है, उसके बाद साइन लेनी है और उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है. ओके, this is a simple way. Now you can use the particular computer system for your practical. So सीक्वेंस क्या रहेगा? थ्योरी रिलेटेड प्रैक्टिकल टाइटल तो आपको मिलेगा वहाँ पे, लेकिन उसके लिए थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा. वंस यू executed the practical, then write down the theory related with your title. Then you have to draw the design. Now in first and second practical there is no any design, ignore it, directly write the procedure. Then observation or conclusion.
Okay, in all the cases, in all the practicals, remaining practicals where the Cisco packet tracer is used, you have to draw the routing table. Okay, then designing designing of the network. So you have to draw the design only, and then make a chart for your uh, particular practical. That is, how many switches you are using, how many computers are using, which type of router you are using, and then that is a table, and then design. Okay, so simple way. Uh, so don't add extra pages. Only use that pages जो आपको मिला है उतना ही आपने यूज करना है. ओके, सो सेकंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज कॉन्फ़िगर आईपी वर्जन 6 यूजिंग एनी नेटवर्क सिमुलेटर. तो यहाँ पर आईपी वर्जन 6 आपने कॉन्फ़िगर करना है. नेटवर्क सिमुलेटर कौन सा यूज करेंगे आप? दैट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर जो आपने किया है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है? सिंपल आईपी वर्जन 6 का एक नेटवर्क ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको एक टेबल बनाना है. रिसोर्सेस क्या लगेंगे आपको वो लगाना है. उसके बाद एक स्टेप्स लिखने हैं. उसके बाद अब स्टेप्स लिखने के लिए आपने पहले टेबल बना लेना है. राउटिंग टेबल में जो इसकी बात कर रहा था, एक राउटर है और 4 पीसी है. सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेबल. यू कैन यूज IP version 6 IP addresses or IP version 4 IP address also for obtaining. So not you cannot use IP version 6 because 4, because it is basically based on IP version 6. So you can use router. You may ignore the router directly. You can use switch. So that depends on you. तो अगर राउटर यूज करते तो देन दैट विल बी बेटर, एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स. ओके, सो क्वेश्चन, simple questions over this practical, that is, what is the difference between IP version 4 and IP version 6? What are the different features of IP version 6? Why we need to use what is the need of IP version 6? हमें IP version 6 की क्यों जरूरत पड़ेगी? What do you mean by depletion? डिप्लेशन क्या होता है? आईपी वर्जन 4 का डिसएडवांटेज क्या है आईपी वर्जन 6 के कंपैरिजन में? और ये भी आएगा, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ आईपी वर्जन 6. तो ये भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे. फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा आपका कॉन्फ़िगर आईपी स्टैटिक राउटिंग यूजिंग रिलेवेंट सॉफ्टवेयर. रिलेवेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूजिंग रिलेवेंट सॉफ्टवेयर मीन्स यू हैव टू यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर. ओके, कॉन्फ़िगर आईपी स्टैटिक राउटिंग. अब यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग आपको यूज करना है तो प्रैक्टिकल के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, राउटिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. और राउटिंग टेबल कब आप यूज़ करेंगे? आप जब आपने डिज़ाइन बना लिया हो, then you can use that. Okay, so here the simple steps are there. Configure IP version 6 address on router 1 with static IPv6 route. Then configure router static IP version 6 यहाँ पे यूज करना है. और उसके बाद शो IPv6 इंटरफेस आप करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है. ये राउटिंग टेबल आपने यूज कर लेना है. राउटर 1, राउटर 2, 2 राउटर यहाँ पे यूज किया है क्योंकि 2 राउटर के बीच में नेटवर्क बनेगा ये, एंड देन ओनली यू हैव टू यूज द स्टैटिक राउटिंग. तो एक राउटर का जो नेटवर्क है दूसरे राउटर के नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए स्टैटिक राउटिंग की जरूरत पड़ेगी. तो ये पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा. टेबल बनाने के बाद आपने डिजाइन करना है, उसके बाद स्टेप्स लिखना है. इसके अंदर क्वेश्चंस क्या रहेंगे? ऑब्वियसली इट इज अबाउट द स्टैटिक. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक आईपी? What is the meaning of static IP routing? Then what are the features of IP static routing? If any disadvantages, then these disadvantages may be asked. Okay, so next is configure IP routing with RIP using relevant software.
तो इसमें तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन सेम प्रैक्टिकल रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे रीप यूज करना है। सो व्हाट डू मीन बाय रीप? रीप का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रीप? रीप मीन्स एक्चुअली राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये तो उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये क्या होता है? इट इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। रीप इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड देन यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों है? बाकी तो प्रोसेस तो आप सिंपल लिख लेंगे रीप के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर कि व्हाट इज द यूज ऑफ रीप, वेयर यू कैन यूज द रीप। रीप कहाँ पर यूज करना है आपने, ठीक है ना? और जब आप दो नेटवर्क्स यूज करते हैं तो रिप कैसे एक्ट करेगा? व्हेन यू आर यूजिंग टू राउटर्स एंड इन बिटवीन दिस टू राउटर्स देयर इज अ नेटवर्क, सो एट द टाइम हाउ दैट रिप विल बी एक्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ रिप? ये क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके ऊपर। फिर है OSPF, तो रीप जैसा है वैसा ही OSPF के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर रीप OSPF जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे अ, ये जो रिप है, रिप के ऊपर रिप के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उससे मिटाने के लिए हमें OSPF की ज़रूरत पड़ती है। सो ये बेसिकली मल्टीकास्टिंग में यूज होता है। सो इट इज़ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये रीप के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ रीप यू कैन यूज दिस वन। सो राउटिंग टेबल शुड बी राइट डाउन हियर, then you have to write down the routing table, then design. Two routers are taken, and you can use here a serial link also. You can use fast ethernet or giga ethernet, doesn't matter. You can introduce a serial link also. So here what is the advantages of OSPF, what are the features of OSPF, how that OSPF can be used in between the two networks. Okay, so next practical, I'm taking some fast to complete this session. Configure user datagram protocol. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसमें हमने 3 प्रैक्टिकल एक साथ लिए थे, तो हमें अलग अलग लेना है यहाँ पे। प्रैक्टिकल नंबर 7, 8, 9, तो इसमें हमने ये तीनों प्रैक्टिकल एक साथ ही कर लिए थे बिकॉज देर इज अ सिंपल डिफरेंस, वन लाइन कमांड डिफरेंस ओनली। सो हियर you can configure UDP and TCP by designing the particular network. So again, you have to uh, draw the table, decide the server, decide the PCs, decide the IP addresses, interfaces. If any gateway, you can use. Otherwise, uh, don't use the gateway. Okay. So here, actually, uh, configure user datagram protocol, configure transmission control protocol, and configure DSCP dynamic host configuration protocol। सॉरी, ये नहीं है, UDP और TCP ये दोनों ही अलग अलग से आपको परफॉर्म करना है, जो हमने इस प्रैक्टिकल में एक साथ किए हैं। इस सर्वर को हमने कॉन्फ़िगर किया है UDP के रिलेटेड और TCP के रिलेटेड। सो you have to write down the uh, different steps over this one. Okay, तो यहाँ पर HTTP, FTP, FTP, देन DNS, ये और ईमेल, ये सारे हमने किए थे इसके ऊपर। तो आपने ये अलग अलग से परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, practical number 10 is not mandatory, so we have ignored that.
तो लिस्ट में हमने देखना है यहाँ पे अभी डीएससीपी का हमने देखा अभी। हाँ, क्वेश्चंस के बारे में अगर पूछूं मैं तो यूडीपी और टीसीपी में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन लेस सर्विस, what are the different features of TCP, what are the advantages of TCP over UDP। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आ सकते हैं। what are the advantages of UDP, then DSCP, what happens if you are not using the DSCP, what is the meaning of APIPA, तो आपने अपीपा का मतलब क्या है, उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे व्हाट दैट मीन्स अपीपे, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अपीपा, देन लास्ट एड्रेस ऑफ अपीपा। तो ये सारी हमें यहाँ पे लेना है। इफ यू आर नॉट यूजिंग डीएससीपी देन हाउ विल यू यूज द नेटवर्क। ओके, सिंपल क्वेश्चन कि अगर आप डीएससीपी यूज नहीं कर रहे तो आप कैसे नेटवर्क को यूज करेंगे, बाय स्टैटिक राउटिंग और स्टैटिक नेटवर्क से हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनएस। ये यहाँ पे डीएससीपी सर्वर, इसका एक प्रैक्टिकल अलग से हमें परफॉर्म करना है। हमने तीनों एक साथ लिए थे 11, 12, 13। तो डीएससीपी के रिलेटेड अपने सिंपल अलग अलग से करना है ये प्रैक्टिकल। एक ही सर्वर यूज करना है। आपने स्विच यूज किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 3 स्विच यूज नहीं करने, आपने 3 सर्वर यूज नहीं करना है, एक ही सर्वर यूज करना है डीएससीपी के लिए, एक सर्वर डीएनएस के लिए और एक सर्वर एचटीटीपी के लिए, और मेल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो एक ही जितना कहा गया उतना ही करना है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा इफ यू आर गोइंग फॉर अनदर प्रैक्टिकल। ओके, सो डीएससीपी के लिए आपको यहाँ पे डिवाइसेस, इंटरफेस, आईपी एड्रेसेस या पूरा टेबल आपने लेना है। देन कॉन्फ़िगर करना है आपको राउटर को रिलेटेड विद द डीएससीपी। डीएससीपी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखनी है और वैसे ही परफॉर्म करना है। देन डीएससीपी की सर्विसेज ऑन करनी है, ये आप सब कर चुके हैं। तो ये पूरा कोड आपने लिखना है। ये डीएससीपी, नॉट ओनली डीएससीपी but this practical includes all the 3 parts. That means DSCP, then DNS and FTP. So what is the DNS? DNS का मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, why we use DNS, what do you mean by work group, and what do you mean by domain, what is the difference between work group and domain, domain और work group के बीच में डिफरेंस क्या है। देन अगर एड्रेस अगर कन्वर्ट करना है नंबर्स में, एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू आर calling some want to download some pages from the server, at that time you have to directly write down the www dot something something dot com or URL, complete URL, but your server doesn't know that. Server can, that means it should map the name map करने के लिए, because we cannot understand or we cannot remember all the numbers, so then it becomes very difficult to contact to the server. So at that time domain is always used. So the procedure of this one, that theoretical process of the domain name system. Then file transfer protocol. So how that file can be transferred, फाइल को ट्रांसफर करना है तो आप कैसे इसको यूज करें। So what is the use of this FTP and how that FTP can be used। तो ये इस प्रैक्टिकल में आपने ये सारी चीजें करनी है। ओके, उसके बाद HTTP। तो HTTP के रिलेटेड भी प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे 11, 12, 13 यही है, साथ में HTTP के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट या
आता है यहाँ पे टेलनेट और कनेक्ट रिमोट मशीन यूजिंग सिक्योर शेल, कनेक्ट रिमोट मशीन यूजिंग टेलनेट, ये हमने दोनों कंबाइनली लिए थे. लेट अस सी दैट आल्सो दिस वन. तो इसमें क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा पूछने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी अ, इसमें पहले परफॉर्म कर लेना है आपने. जो हमने पहले एसएसएच और टेलनेट के लिए हमने जो प्रोसेस की है वो प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखनी है और वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है. तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे इस प्रैक्टिकल में? सो टू हमें क्या करना रहता है एक्चुअली, जब एक साथ दोनों प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म हो रहा है, if you are performing both practical, that means related with the telnet and related with the ssh, at that time you have to disable the services of telnet first if you are using the ssh. So how will use that? So the question is to disable telnet, which command you can use. आप कौन सी कमांड यहाँ पे यूज करेंगे एज सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर? तो इसमें सिंपल सी कमांड है, एक ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच. आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा टेलनेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेलनेट और एसएसएच के ऊपर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच? दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है टेलनेट और एसएसएच के बीच में? देन व्हाट इज एसएसएच? सिक्योर शेल. तो ये क्या है? सो वहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड एनक्रिप्टेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बोलनी पड़ेगी. कैन यू रन बोथ टेलनेट एंड एसएसएच एट अ टाइम? सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप टेलनेट और एसएसएच दोनों एक साथ रन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. You have to disable the telnet first if you are using the same on single machine. Okay, so this is about what telnet and ssh. Next is last practical, that is smtp protocol. Now this smtp protocol, pop3 और icmp, ये जो है ये हमने एक साथ ही परफॉर्म किया था. तो उसके लिए सर्वर लगेगा, हमें 2 पीसी लगेंगे और कुछ कमांड्स यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है. सो दैट यू कैन यूज द SMTP, you have to use the Cisco packet tracer where you can use the browser and you can put the address and then mail the, you can use the email. बिकॉज SMTP इज रिलेटेड, SMTP हो या फिर पॉप हो या फिर IMAP हो, ये किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल, रिसीविंग द मेल. ओके, सो what is the purpose of SMTP? What is the purpose of SMTP? And then what is purpose of that means POP3? Then what is the purpose of IMAP? So all these are the things you can face in the Viva. What is the basic difference between SMTP and POP3? दोनों में basic difference क्या है? How to configure SMTP? How to configure POP3? So like that, you can use. You can you must be prepared for all these practicals in both ways. That means using the that means for Viva as well as performance. For me, performance is more required than Viva. Okay, so let's see how you'll perform. Easiest way uh, is that you have to repeatedly read the manual. Okay, you have manual, आपके पास manual है
और आपने मैनुअल में क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म किया है उसका स्टेप्स लिखा है, वो स्टेप्स एक बार देख लीजिए. एंड ऑल्सो यू कैन read the questions. Okay, so I think it is sufficient for now. We'll see on Monday. Okay, so best of luck.